privileged moment for us that university has joined the hands with SIDBI, Small Industrial Development Bank of India, and it's a reputed institution of the Government of India and has been contributed immensely in diverse areas in different parts of the country. So Center for Capacity Building and Skill Development with the mandate of reaching out to different parts of the UT in terms of providing trainings, initiatives in the area of skill development. In the recent past, the center has collaborated with other institutions of the country as well, whether it is a NISBID, NSDC, and also joined hands with the SIDBI. As per the directions of the Honorable Vice Chancellor, where the center had worked in different districts in terms of imparting training to the women in the area of fashion designing, cutting and tailoring, and Honorable Vice Chancellor desired that we should not leave these women whom we have trained for the specific time period as that whole training goes waste. So as per that directions, we thought of, yes, that's very important direction from the Honorable Vice Chancellor, and accordingly we were looking for the institutions who could support us in addition to the support we are getting from the Vice Chancellor, and we reached out to the SIDBI and have had many deliberations with them with regard to our program, with regard to the work we have done, and had number of meetings. And then we were fortunate, finally we selected an area in Bandipora. It's a tribal area, ma'am. It's a tribal area where all these families are below poverty line. Many of them are dropouts where literacy is also a question. So university has been reaching out there also. Today you will see that these women who have been trained by the university, they have some amount of skill. And the university flag is there. We collaborate with the government, we collaborate with the Deputy Commissioner Officer Bandipora to run this center who provide us the support. So when we have a meeting with the SIDBI, we told them, let you visit that center, let you have a look, and once you get convinced, then only we can join hand, because it was not that we could, we can run any project in closed eyes. Their team went to the Bandipora, they made an assessment and a situation analysis was done, and they were convinced. After that, we again joined hand, and finally the project was sanctioned in favor of the center. So ma'am, in this project, we have identified 25 women belonging to the below poverty line, and it's a tribal belt. That is a value addition which I was talking to Al-Sab as well. That is a tribal belt, dropout, below poverty line. We may be giving training in different fields who are exposed to university life, who are exposed to urban life, but this belt remains neglected. And this can be a very unique contribution of the University of Kashmir and SIDBI as well, reaching out to this section of the society. So accordingly, a project has been devised wherein the training they have already received from the university. Now this project will be for 1 year, and during this 1 year project, we again have had a deliberations. For 4 months, they will again be getting upskilling training what they have learned. It will be followed by a hand holding, then they will be given exposure, they will be brought to university as well. We have funding support from that. We are sending some entrepreneurs as well who are known in the valley, who can motivate them, who can enlighten them what are the new avenues. And ultimately we plan that we can have a startup from this unique center, who are girls who have not that much of education, who are poverty ridden, and can do hand holding, and that can push them to a new ventures which can really help them for achieving their livelihood. To be honest, today I can see a ray of hope. A ray of hope, what I have been saying since I have joined this university, because even I have witnessed कि हमने बहुत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए, कितनी बच्चियों के लिए किए, चाहे SRC से किया हमने, चाहे किसी प्रोजेक्ट में किया या थ्रू DLL किया, लेकिन हमने शायद उनको फिर फर्दर
हैंड होल्डिंग नहीं की है। अब क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सिडबी के इतने प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, या बाकी यूथ स्किल डेवलपमेंट बाकी जो JNK की गवर्नमेंट कर रही है, उसमें इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इन बच्चों की हैंड होल्डिंग करें। मुझे बहुत खुशी है कि कि आपने आइडेंटिफाई इतने कम टाइम में एक ट्राइबल एरिया में 25 बच्चों को ये ना आइडेंटिफाई किया है। और अभी जो ये शहनाज एक लड़की बोल रही थी कि आप 1 साल ये चलाए, आप ये देखिए, एक होप है उनको, होप है, हमसे हैं, आपसे होप है। और मुझे लगता है इस होप को हमको एनकैश करना चाहिए। यूनिवर्सिटी को जो भी करना है, आई विल डू इट, विल डू इट। और आपका तो है ही कि फाइनेंशियल सपोर्ट है, इन्होंने मुझे पुट अप किया। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला काम हम करेंगे, इट विल बी अ फेदर इन योर कैप टू, एंड इंशाल्लाह अ फेदर इन आवर कैप टू। मैं इनफैक्ट हम इसको पर्सनली भी मैं विजिट करूँगी व्हाट्स हैपनिंग, ताकि इन बच्चों को हम एनकरेज करें और रियल सेंस में वी गिव देम ट्रेनिंग। इसमें ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू कंट्रीब्यूट, वर्क हार्ड। और ये एक स्टार्टअप एक ही स्टार्टअप भी, 2 स्टार्टअप, वॉट एवर इट इज़, कैसे हम क्रिएट करें, जिन बच्चों में जो स्किल है उसको हम टैप करें, हैंड होल्डिंग उनकी करें, आगे सीड मनी दे दें फॉर स्टार्टअप, ऐसे करके। एंड वी आर लकी कि सिडबी हैज़ कम फॉरवर्ड, जो हमने पहले नहीं किया था। एंड फॉर दैट आई रियली कंग्रेचुलेट डॉक्टर आदिल एंड हिज टीम दैट दे हैव रीच्ड आउट टू यू। तो मैंने इनको डे 1 से बोला था कि जस्ट रीच आउट, अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं हमको भी करना चाहिए। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो भी इनको ट्रेनिंग मिलेगी, नेचुरली आपने वो मैंने देखा कि क्या प्रपोजल दिया है, तो आई एम श्योर चाहे बच्चों को यहाँ आना पड़े, बाहर जाना पड़े, वॉट एवर इट इज़, हम करेंगे। और रियल सेंस में जो है स्टार्टअप्स जो हैं स्टार्ट कराएंगे, और इनको पूरी जो ट्रेनिंग है, फुल स्किल ट्रेनिंग हम देंगे। वी आर लकी कि यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी बेस बनाए हुए, ये तो एक 25 लड़कियां ये है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स, डिफरेंट पेपर मैशी है, बाकी है, हम उनको भी टैप करेंगे इंशाल्लाह। और उन्हीं से ही छोटे छोटे यूनिट्स हम करेंगे। ये तो टेलरिंग, कटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का है, इंशाल्लाह इनको काम देंगे, स्कूलों के बच्चों का काम देंगे, वॉट एवर, यहाँ पे हमें कुछ काम में हम इन्हीं को देंगे, इन्हीं को इन्वॉल्व करेंगे, सो दैट इनको एक कॉन्फिडेंस मिले और दे आर एबल टू, जो इसका मेन मिशन है अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे हो। और सबसे पहले इसमें अगर हमने इनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो भी करना है, दैट आदिल विल पुट अप, हम वो भी करेंगे। यहाँ से हमको प्रोफेसर भेजने हैं, हम भेजेंगे, सो दैट एक रियल जो इनकी ट्रेनिंग है हम लोग करें। सो आई एम वंस अगेन वेरी थैंकफुल टू सिडबी, यूनिवर्सिटी इज थैंकफुल कि you have come forward, and we do look to you to fund our other groups also. तो यहाँ कंगन एरिया से भी अगर कोई है उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे, अर्बन में भी करिए आप यहाँ पे, so that 2-3 डिफरेंट ग्रुप्स को हम ये ट्रेनिंग देते हैं, so that we can come up with something. Particularly in the field of upskilling, skilling and other skill development courses, Honorable Vice Chancellor has given a task to this new center. It was erstwhile SRC, where I also worked. Now it is a capacity development and skill development center, and we are hopeful that this center, but in different centers we are giving training, we are upskilling and giving skill to them, but we are not, to be honest with you, we are not giving them the way forward after they are trained in our centers, extension centers. Already this center has taken few initiatives in the RUSA grant. They have skilled women only
in 4 districts, which was a successful project on their part. Now this project with SIDBI will be, hopefully, I believe that it will be a successful project in terms of that there will be sustenance in the project. That is more important. Sustained livelihood will be there. So that will help particularly the girls or the women folk to earn their livelihood, to become less dependent on the male anarchy or patriarchy, what we call in our terminology. So I'm hopeful that this will not only help in giving them a livelihood, but it will give them a social, educational, economic respect to them. We're thankful. हमारा जो मेन रोल है एज एन इंस्टीट्यूशन, पूरे देश में लगभग हम इस तरह से 4 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के साथ काम करते हैं और हर साल तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का लोन जो है हम ऐसी महिलाओं तक प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। बहुत सारे लोगों ने जो है सिडबी का नाम नहीं सुना होता है या नहीं जानते हैं, तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि जब हम फिल्में देखते हैं तो गाना अगर पीछे लता मंगेशकर गा रही होती हैं तो सामने कोई और होता है। तो हमारा रोल काफ़ी बार जो लता मंगेशकर की तरह होता है, जहाँ पे जो फ्रंट इंस्टीट्यूशन है, जो सामने काम करने वाली संस्थाएं हैं, वो दूसरी होती हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो काम करती हैं, चाहे वो JNK बैंक हो, RRBs हों, इलाक़ाई देहाती बैंक हो, बहुत सारी NBFCs हैं, इनको हम सपोर्ट करते हैं कि ये आगे लोगों को लोन दे सकें। लेकिन दूसरे बैंकों में और हमारे जो खुसूसी तौर पे जब हम अपने आप को अलग देखते हैं, हम अपने आप को डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं और गवर्नमेंट का भी ये मानना है कि फाइनेंस के पहले डेवलपमेंट होना चाहिए। फाइनेंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या लोन लेके अपने बिजनेस को बढ़ाने की जो सहूलियत है वो हमारे अंदर तभी आएगी जब उसके पहले वो डेवलपमेंट होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द पायलट इनिशिएटिव विच वी स्टार्टिंग विद अ वेरी स्मॉल 25 वुमेन, बट देन वी विल बी हैप्पी टू गो लार्जर माइल टू कनेक्ट विथ मेनी ऑफ द पीपल, मेनी ऑफ द डिफरेंट लोकेशंस जहाँ पे हम इस तरह का काम करें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का, वाइस चांसलर मैम का, कि इस पार्टनरशिप की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, जहाँ पे हम जो है सिर्फ ये जो बीज हमने बोया है इसको हम पेड़ बनता हुआ देखें, बड़ा होता हुआ देखें। और ये जो 25 लोग हैं जिनके साथ हम ये शुरुआत कर रहे हैं, इसमें से कुछ ऐसी केस स्टडीज़ हों जो आसपास के इलाके के लिए एक रोल मॉडल का काम करें। सो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जो लोग फील्ड में हैं कि भाई ये 25 लोग जो है हमारा कहा जाए कि पहला बैच है जहाँ पे हम ये शुरुआत कर रहे हैं। सो ये पहला बैच जो है वो आगे आने वाले बैचेस के लिए किस तरह से मोटिवेशन का काम करे, रोल मॉडल का काम करे और जो भी पॉसिबल कोशिश होगी, चाहे आपको ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलाना, आपको श्रीनगर में लेके आना, आपको जम्मू लेके जाना, ज़रूरत पड़ी तो आपको दूसरे शहरों में लेके जाना जहाँ पे आप एक्सपोजर देख सकें, समझ सकें कि भाई ये बिजनेसेस चलते कैसे हैं। और जिस हुनर में आप हैं, मुझे लगता है कि आप अपने आसपास ही आप देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अपनी महीने की जो एक आमदनी का जरिया जो है इस हुनर को बना सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप सिर्फ सीखें ना, उस सीखने को अपनी आमदनी का जरिया कैसे बनाना है उस रास्ते पे चलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि सिडबी को आपने इस साथ इस मुहिम में जोड़ा, एंड विल बी हैप्पी टू वॉक अलॉन्ग विथ।